Hello friends, in this video we will talk about Francis Bacon. He is essayist who wrote essays. He was born in 1561 and died in 1626. And Bacon is the first recipient of the Queen Council of Designation, and he became legal advisor of the Queen Elizabeth I. Okay. When Queen Elizabeth died and James I came to the throne, Bacon became the knight. Knight means Sir added to his name. He became Sir Francis Bacon. Okay. Bacon took up Aristotelian ideas. He was also called as the father of empiricalism. Okay. He was the father of empiricalism. His works argue for the possibility of scientific knowledge based upon inductive reasoning. Inductive reasoning क्या होती है? Means first you have to look at the part, then about the general meaning. Now on March 1626 he was performing an experiment in which he is experiment with ice. His room became extremely cold and musty and he developed longitis. ये एक डिसीज़ है जो उनको हो गई थी while he was doing experiment. Okay, तो he developed a prose style name. You have to remember this: aphoristic. aphoristic. Aphoristic prose style means a person who uses maxims and proverbs. So who used maxim and proverbs? Francis Bacon used maxim and proverbs. So he developed aphoristic prose style. It is called aphoristic prose style. Now बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने वर्क्स की तरफ, फ्रांसिस बेकन के वर्क्स की तरफ. The first work of Francis Bacon is Instauratio Magna. Instauratio Magna means development of learning in human and divine. Okay, इंसानों में डेवलपमेंट और डिवाइन पावर्स में डेवलपमेंट की बात हो रखी है. ठीक है. आल्सो कॉल्ड ग्रेट इंस्टॉलेशन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेट इंस्टॉलेशन. He took the idea from Bible. In Bible, God created universe in 6 days, and on 7th day he took rest. That is on Sunday. In this also Francis Bacon imitated the work of 6 days. उन्होंने भी वही किया जो 6 दिन काम करने का हम बोलते हैं, इमिटेट किया उसी वर्क को जो बाइबल में लिखा गया, लीडिंग टू द 7th day of rest. This great work divided into 6 parts. You have to remember this. Many times this question is asked. Okay, so this great work is divided into 6 parts in order to imitate the divine work. Okay, so 6 parts are, I am telling one by one, you have to write down. 6 parts are: partition of sciences. First is partition of sciences. Next is new method. Next is natural history. Third, natural history. Fourth, ladder of intellect. Fifth, anticipation of second philosophy. Sixth, the second philosophy or active sign. Again, I am repeating the 6 parts. First is partition of sciences. Second, new method. Third, natural history. Fourth, ladder of intellect. Fifth, anticipation of second philosophy. Sixth, the second philosophy or active sign. Okay, तो in 6 parts में से the important one is new method. तो we will discuss it in detail. New method original title is Novum Organum Scientiarum. Actually it means new instrument of science. This question is asked many times even. New method, what is the new original title of new method? So you have to take Novum Organum Scientiarum. Okay, written by Francis Bacon, or it means new instrument of science. It is a part of Instauratio
magna. It is a part of Instauratio Magna. It is a reference to Aristotle work. Okay, Organon. It is reference to Aristotle work Organon. Gave logic and philosophy in this work. Okay, he gave logic and philosophy in this work. He says that there is a new system of logic which is superior to the old way of philosophy. New system is known as Baconian method. जो new system Francis Bacon have invented this new system, so it is called Baconian method. Okay, the title Novum Organum Scientiarum, the title Novum Organum Scientiarum depicts an image of a galleon, kind of ship, galleon, Galleon, galleon. It is a kind of ship passing between mythical pillars of Hercules. Okay, एक इमेज है जो दो पिलर्स है उनके बीच में से एक शिप पास हो रही है. ओके, द मिथिकल पिलर्स आर डिस्ट्रक्टेड व्हेन द शिप इज पासिंग. मिथिकल पिलर्स क्या हो गए? डिस्ट्रक्ट हो गए व्हेन द शिप इज पासिंग. व्हेन दिस पिलर्स आर डिस्ट्रक्टेड दिस ओपन्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन. जब ये पिलर्स बीच में से हट गए उसके बाद में एक न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि नई दुनिया की खोज हुई. द लैटिन टैग इज़ देयर इन दिस वर्क. लैटिन टैग का मतलब क्या होता है? मैनी विल ट्रैवल एंड नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड. बहुत सारे आएंगे, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे. एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल. Okay, I will repeat these lines. Latin tag, the Latin tag is there in this work. Okay, you have to remember this point. The Latin tag is there in this work. Latin tag means many will travel and knowledge will be increased. Okay, and it is taken from Old Testament of Bible. This book divided into two parts. जो ये बुक है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. Okay, first is interpretation of nature and the empire of man. The first is interpretation of nature and the empire of man, and the second one is on the interpretation of nature or ring of man. On the interpretation of nature or ring of man. Okay, so you have to remember this book new method is divided into two parts: interpretation of nature and the empire of man. The second is on the interpretation of nature or the ring of man. The next work we'll discuss is advancement of learning. Francis Bacon, advancement of learning. It is addressed to King James I. Advancement of learning. It is addressed to King James I, and it is written in form of learning to King James. It is introduction to partition of sciences. Okay, जो फर्स्ट वर्क है partition of sciences उसी का इंट्रोडक्शन है, and it is divided into two parts. First part is book 1. जो फर्स्ट पार्ट है वो it is about civil, religious and philosophical knowledge. Okay, तो book 1 is about civil, religious and philosophical knowledge in the advancement of learning. Okay, so first he began by praising King James for appreciation of knowledge. Then he outlined his own ideas on the excellency of learning and knowledge. In Bible there is a wise king Solomon who said that we should not run after knowledge because knowledge ultimately brings anxiety. But according to Bacon, बाइबल में ये बोला गया है कि वी शुड नॉट रन बिफोर द नॉलेज, बट अकॉर्डिंग टू Bacon, knowledge is of two types. Proud knowledge brings to atheism. Atheism, who does not believe in God, means who does not believe in God, atheism. Proud knowledge brings to atheism. But pure knowledge, the second one is pure knowledge. Pure knowledge will help you in raising his own standard in leading a better life, and proud knowledge will lead to your own downfall. Okay, so in this he introduced two types of knowledge: proud knowledge and pure knowledge. Proud knowledge brings to atheism, who does not
believe in God and pure knowledge. Okay. Martin Luther is praised by Bacon in this work. Okay, pure knowledge जो मार्टिन लूथर है उन्होंने प्रेज किया है बेकॉन ने इस वर्क में उनको. सेकेंड बुक इज़, फर्स्ट बुक इज़ सिविल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नॉलेज. सेकेंड बुक इज़ इट आउटलाइन 3 ऑब्जेक्ट्स. दिस बुक, सेकेंड बुक आउटलाइन 3 ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट इज़ प्लेसेस ऑफ लर्निंग, बुक्स ऑफ लर्निंग, एंड थर्ड इज़ पर्सन ऑफ द लर्न. थर्ड इज़ पर्सन ऑफ द लर्न. तो प्लेसेस ऑफ लर्निंग में आएगा इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके. एंड द सेकेंड वन बुक ऑफ लर्निंग, इट इंक्लूड्स लाइब्रेरी एंड हाउस ऑफ सेंट्स, जहाँ से हम लर्न करते हैं कोई भी चीज़. हम कहाँ से पढ़ते हैं बुक्स ऑफ लर्निंग कहाँ पे मिलती है हमें, लाइब्रेरी या फिर हाउस ऑफ सेंट्स. ओके. तो ही इज़ कॉलिंग बुक्स एज ऑथर्स एडिशन ऑफ नॉलेज. ओके, ऑथर एडिक्शन ऑफ नॉलेज भी बोला है इन्होंने बुक्स को इसमें. द पर्सन ऑफ द लर्न, इट इंक्लूड्स रीडर ऑफ साइंसेस. ओके, इट इंक्लूड रीडर्स ऑफ साइंसेस. द नेक्स्ट इज he is also talk about human understanding. In this he is also talk about human understanding and divide it into 3 parts. Human understanding को he'll divide it into 3 parts: history, पोइट्री एंड फिलोसफी. हिस्ट्री में मैन फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन की बात की है इन्होंने, पोइट्री में मैन फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन की बात की है, फिलोसफी में मैन फैकल्टी ऑफ रीजन की बात की है उन्होंने. देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात की और डिवाइड उनको, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को 3 पार्ट्स में किया था. अब हम 3 एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के. तो वो है डिवाइन, ह्यूमन एंड नेचर. डिवाइन, ह्यूमन एंड नेचर. तो डिवाइन जो है उसी को 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है: नेचुरल थियोलॉजी, रिवेल थियोलॉजी एंड ह्यूमन फिलॉसफी. ह्यूमन फिलॉसफी जो डिवाइन नेचुरल थियोलॉजी है, दिस आर द लेसन्स ऑफ गॉड इन नेचर. ओके, दिस आर द लेसन्स ऑफ गॉड इन नेचर. और जो रिवेल थियोलॉजी है, लेसन्स ऑफ गॉड इन सीक्रेट और स्क्रिप्चर्स लाइक बाइबल. लेसन्स है गॉड के सीक्रेट स्क्रिप्चर जैसे बाइबल में लिखा गया है वैसे. नेचुरल फिलॉसफी की बात की है. नेचुरल फिलॉसफी कहाँ से आएगी? फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट एक्सेट्रा से, ठीक है. तो नेचुरल फिलॉसफी में इंक्लूड किया है. ह्यूमन फिलॉसफी में इन्होंने यू आर स्टडिंग द माइंड, दिस इज़ मॉडर्न फिलॉसफी विच वी आर following. Human philosophy is a modern philosophy which we are following. Okay, so let us discuss 2 questions. Which writer distinguish between theological truth and scientific truth? Which writer distinguish between theological, first question is which writer distinguish between theological truth and scientific truth? Answer is Francis Bacon. So in this type the questions are asked. Okay, the next question is, in advancement of learning, Bacon noted the need of more study of, किसकी बात की इन्होंने? moral knowledge and civil knowledge की. Okay, तो you have to remember this, moral knowledge and civil knowledge की बात की इन्होंने किस में? advancement of learning में. Okay, तो thanks. Please watch, like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so you will get my notification. Okay, so thank you, have a nice day.